Hello students, the question is a uniform circular disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disk as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. So the problem is based on the topic moment of inertia. And the situation is something like this, that originally there is a disk, complete disk, having a radius of r and mass m, and it is rotating about the axis which is perpendicular to its plane. Now what I have done is disk is cut here as shown in the figure of radius r by 2 from the original disk, and this remaining shape, now we have to find out its moment of inertia about the axis which is passing through the original point, that means the center of the bigger circle, bigger disk. So we have to find out this moment of inertia, the remaining shape. So to solve this particular problem, first of all we have to find out what is the mass of the removed body, of the removed disk. The disk which is removed here, this section which is cut here, what is the mass? So for it we have to use the concept that it is uniformly distributed mass. So for the uniformly distributed mass, the surface mass density is same. So in this way, we can say that for the original, we can write mass upon area, which is m upon pi r square, should be equal to x. Suppose x is the mass of the removed part, so x upon pi r by 2 whole square, because the radius of the removed part is r by 2 here. Now solving this x comes out to be, the value of x comes out to be m upon 4. Now, this thing which we can use for the further calculations. This is important for the further calculations, the mass of the removed body. Now, we have to calculate the moment of inertia of the remaining part, of the remaining part. So, the moment of inertia of the remaining part is equal to the moment of inertia of the complete disk, of the complete disk minus the moment of inertia of the removed part. Now, the moment of inertia of the complete disk can be written down as, it is basically mr square by 2, by the basic formula of the moment of inertia of the disk, mr square by 2. Now, the moment of inertia of the removed part can be calculated by using the parallel axis theorem. The important point here is this: we can straight away write down the moment of inertia of the removed part, but we have to shift its axis, because the axis by which this final object, the final removed, or we can say that the final object is the same as in the previous case. For example, I am indicating it as O, for example, and this is O dash. So we have to basically shift this moment of inertia of the removed part from O dash to O. So we have to use the parallel axis theorem here. Now, according to parallel axis theorem, first of all, we are calculating the moment of inertia about O dash, the perpendicular line, the perpendicular axis at going through the O dash. So the value of the moment of inertia going through O dash perpendicular to the plane is given by m by 4 multiplied by r by 2 whole square upon 2. But we have to shift this axis from O dash to O. So we have to use the parallel axis theorem, and according to parallel axis theorem, we have to add this term here, m by 4 into this distance between O and O dash, which is basically r by 2. So r by 2 whole square. That's the important point, key point here. Now further we can solve this equation. So this is mr square by 2 minus, now you can easily see that
this whole term, suppose we call this whole term m by 4 r by 2 whole square as z, for example. So this is z, so this is also z. So in this way, this is z by 2 plus z, and z by 2 plus z is 3 by 2 z. So straight away we can simplify this calculation. So this becomes, this value becomes 3 by 2, 3 by 2 times m by 4, m by 4, sorry, this is m by 4 times r by 2 whole square, because we have assumed this to be z. So 3 by 2 z, m by 4 r by 2 whole square. Now we can take mr square by 2 as common. So this becomes 1 minus, after solving it, this becomes 3 upon 16. After further solving, we get this final result as 13 by 32 times mr square. So in this way, we can say that option 4 is correct here, 13 by 32 mr square. तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर और जिसका मास m है। ये रोटेट कर रही है एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है इसके प्लेन से और इसके सेंटर से पास हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट शो किया है। यहाँ से जो है इसका एक्सिस पास हो रहा है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस r बाई 2 है उसको यहाँ से रिमूव किया गया है, जैसे आप व्हाइट सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। उसमें हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का, रिमेनिंग बॉडी का, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रही है ग्रे पोर्शन में, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस एज गिवन अबव। एज गिवन अबव का मीनिंग है कि ओ से पास होता हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो रिमूव्ड पार्ट है, रिमूव डिस्क पार्ट है, उसका मास निकालना होगा। उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का केस है, यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मतलब सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सेम है थ्रू आउट द डिस्क। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। मास ऑफ द रिमूव पार्ट को हमने x माना और यहाँ से x को सॉल्व किया हमने m बाई 4 निकल के आया। इसको हम आगे फर्दर अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें यूटिलाइज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमेनिंग पार्ट का होगा वो बराबर होगा I, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव पार्ट का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क के लिए सिंपल जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसके हिसाब से होगा हाफ mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं, उसके मास को उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करके। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा उसके सेंटर, रिमूव पार्ट के सेंटर यानी ओ डैश से निकल के आएगा, लेकिन हमें निकालना है उसको विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसको हमें एक तरह से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इसके एक्सिस की, जिसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है कि ओ डैश के राउंड अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओ डैश से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंगली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हमें ऐड कर देना है मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, उसका स्क्वायर, यानी m बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय ओ डैश स्क्वायर, और ओ डैश की वैल्यू है r बाई 2 के बराबर। तो इस तरह से जो है हमारा ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए m बाई 4 इंटू आर बाई 2 होल स्क्वायर को हम कोई एक न्यू वेरिएबल का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल z। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर z बाई 2 प्लस z। z बाई 2 प्लस z का मतलब हो गया 3 बाई 2 z। z को दोबारा से पुट कर दिया जो हमने अज्यूम किया था 3 बाई 2, और z की वैल्यू हमने जो अज्यूम की थी m बाई 4 r बाई 2 होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फर्दर हमने सॉल्व किया तो फाइनल जो इसका आंसर आता है वो आता है 13 बाई 32 mr स्क्वायर। So 13 by 32 mr square is the final answer. Option number 4 is correct here. Hope you understand the explanation. Thank you.